भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुके थे, पर किसने सोचा था आराम इस कदर आएगा। घर जाने को उत्सुक रहते थे, पर किसने सोचा था बाहर निकलना इतना दुर्लभ हो जाएगा। वीकेंड्स की बाट देखते थे, पर किसने सोचा था कि एक दिन छुट्टी तो होगी लेकिन पता भी नहीं चलेगा। खुशनसीब हैं हम जो हमारे पास रोटी, कपड़ा और खेलने को अपना आशियाना है। पर किसने सोचा था कि खेल देखते देखते कुछ लोग ज़िंदगी से आउट हो जाएंगे। इस बीमारी को रिटायर करने में दुनिया के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लगे हैं, पर किसने सोचा था खाली ग्राउंड्स देखकर कुछ लोग और बीमार हो जाएंगे। खेल लोगों को जोड़ता है और शायद इसीलिए कुछ लोगों ने सोचा है कि इसके वापस आ जाने से कुछ परेशानियां तो कम होंगी। खेल जगत में उम्मीद की किरणें जगी हैं कि शायद इस महीने कुछ इवेंट्स वापस लौट आए। सब इससे संतुष्ट तो नहीं होंगे, पर क्या मालूम ये लोगों के घर के अंदर रहने का एक जरिया बन जाए। Hello everyone, welcome to Sports in Amma. I am Mohit Raj, and in this video I'll be telling you about the possible return dates of various sports. चंद महीनों पहले जब इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया ओडीआई बारिश के कारण रद्द हुआ था, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले मैच से पहले उन्हें इतना लंबा वेट करना पड़ेगा। लिवरपूल ने भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे सीज़न के बाद उन्हें जब ये ब्रेक मिलेगा तो वो एक हार के साथ जाएंगे। राफेल नडाल को भी इस बात की भनक ना थी कि फ्रेंच ओपन का उनका ये विजय रथ कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक पैंडमिक रोकेगा। खैर, जो हो गया उसे कौन रोक सकता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव न्यूज़। The UFC returned on Sunday with UFC 249 in USA. Meanwhile, football and basketball was played in South Korea. It's a no-brainer that all these things were held without fans, but at least they laid the foundations for the major football and other leagues to begin. Following the return on Sunday, the UFC is set to host another event on Thursday. The UFC's return can be credited to the aggressive approach of UFC President Dana White, who was even ready to host the events on his private island should the international governments ban him from hosting the events in countries. The domestic league in Belarus never stopped, but it has been more than 2 months since the ball was kicked in a major league. However, the German Bundesliga is set to resume on May 16th. In Spain, players have started returning to training. Meanwhile, Italy wants to take one step at a time. England also has started recalling the players one by one, and there are hopes the English Premier League will resume in June. India's ODI against South Africa on March 12 was abandoned due to rain. In what looks like the earliest possible return date, England are planning to take on West Indies on July 3. Meanwhile, the ICC Women's World Cup qualifier, set to begin around the same time, has been postponed. The last league game was played in Super Rugby on March 15th. लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वायरस को लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति में है इस समय, और Australian clubs have even started returning to training. Meanwhile, Rugby League is set to resume via NRL on May 28th. No major tennis tournament has taken place since the first week of March, but the French Open organizers have said they want to stick to their September plans, which means September looks like the most likely return date for tennis. The news is not good for badminton. The BWF chief has said that the return cannot be predicted. Let's not make it a fantasy world though. The safety of players, staff, and everyone concerned remains the key. One of the UFC fighters and several La Liga players have tested positive. This has clouded the possible return of major leagues.
But let's hope the sports return sooner rather than later. With this, I sign off for this time. Stay safe, stay happy. Thank you.